Hey everyone, what's up? I'm Chef Aruna from Truffle Nation Baking Academy, where we help bakers like you to become professional pastry chefs. और आज हम बनाने जा रहे हैं एक नो बेक डेजर्ट जो कि Oreos and white chocolate से बनी है. With its fudgy texture and crunchy Oreos, this fudge will be one of your all-time favorite. So let's start the recipe. But before starting, make sure कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें so that you guys can stay updated with all our upcoming videos. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक 6 इंच स्क्वायर रिंग को डबल क्लिंग रैप करेंगे सो दैट देयर इज नो लीकेज। अब हम इस ग्लास बोल में व्हाइट कवर्चर चॉकलेट एंड कंडेंस मिल्क को मेल्ट कर लेंगे। इफ यू डू नॉट हैव कवर्चर देन आप यहाँ पे कंपाउंड चॉकलेट भी यूज कर सकते हो, बट द टेस्ट विल बी स्लाइटली डिफरेंट। So as you can see, the chocolate is kind of grainy, but do not worry. When we add warm cream into it, it will come to the right consistency. Now we'll add in warm heavy cream into this. अब हम इसमें क्रश ओरियोस फोल्ड करेंगे। सो हमारा फज इज हाफ वे रेडी। अब हम इसे अपने प्रिपेयर्ड टिन में पोर करेंगे। अब हम इसके ऊपर ओरियो कुकीज प्लेस करेंगे लाइक दिस। Now we'll keep it in the freezer for 4 to 5 hours. So it's been 4 to 5 hours and our fudge is ready to be demolded. To demold, we'll first run heat gun through the side of the ring after removing the cling wraps.
Then we'll simply lift the ring and cut the fudge into 9 equal pieces. एंड हियर यू गो गाइस, हमारा कुकी एंड क्रीम फज तैयार है। आई रियली होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। If you like the recipe, then share some love by clicking on the like, share and subscribe button of our channel. And do hit the bell icon to get notified every time we post a new recipe. Till then, keep baking.